So up to 4.4, it was completed. 3 of the DPPs are left. Now, the states of matter chapter advanced के लिए it's like not in so much of detail. There are a lot many questions which are given in the DPP 4.5, 6, and 7. So I'll just cancel those questions because numerical form of questions from this particular chapter doesn't come. तो यहाँ पर जो real gas equation है, then there is another concept of Berthelot equation. That part is not there in the syllabus. So I'll just cancel those questions during the discussion. You don't have to do them. Okay. Yes, sir. So moving with 4.5, van der Waals gas equation and other equation of state for real gas. Now this other equation of state for real gas, it's basically the Berthelot equation, which is not there in the advanced syllabus also. तो उसका एक पूरा कॉम्प्रिहेंशन दिया है, वो पूरा कैंसिल कर देना है. 4.5 DPP comprehension is to be cancelled. Now, starting with the 7th one, which of the following expression between the van der Waals constant B and the radius R of spherical molecules is correct? Now, in the real gas equation, what was B related with? Volume of the molecule. The volume occupied by the gas molecules. It is also called as Excluded volume. excluded volume. Correct. So basically, all the gas molecules which was earlier considered as point particles would definitely occupy some volume depending on the size of the gas molecules. So if I consider two gas molecules, as per the real gases, definitely there will be some kind of force of attraction as well as repulsion between the gas molecules. Matlab, when the two gas molecules are coming closer to each other, there will be some point beyond which the gas molecules will not be able to come close, because in this case the forces of repulsion will start dominating. ठीक है, दो गैस मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद और क्लोज नहीं आ सकते हैं, बिकॉज नाउ द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन विल स्टार्ट ऑपरेटिंग. तो यहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर रीजन रहेगा, उसके बियॉन्ड ये गैस मॉलिक्यूल्स जो है और ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते हैं. तो दिस इज बेसिकली वी कैन से द स्पेस, the minimum space between the two gas molecules beyond which they will not be allowed to come closer. तो अगर हम ये वाला sphere consider करें, तो with respect to gas molecule this is the radius r, and ये वाला जो sphere है, the imaginary sphere, we are considering this, let's say, to be r or r dash. बराबर. तो ये वाला जो sphere है, that is considered to be 4 times the volume of the sphere of the gas molecule. मतलब B जो है, the excluded volume is actually given as 4 times the volume of the sphere, and this is for one gas molecule. So if we consider for for 1 mole of the gas molecules, then we have to consider the Avogadro's number also. ठीक है, तो जो excluded volume है वो मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे किया जाता है, it's 4 times the volume of the gas molecule. तो ये जो अंदर का रेडियस है, that is r, and here this sphere is basically 4 times the volume of the sphere. Clear? Yes, sir. So the answer to this would be the relation between B and the radius r of the spherical gas molecule will be 4 times 4 by 3 pi r cube into Na, the Avogadro's number for 1 mole. So the answer is D. No numericals, but just
The theoretical part you need to remember. Eighth one. The value of compression factor of a van der Waals gas at critical point is. What is the compressibility factor at the critical point? Given as ECDC by RTC. perfect. Because Z is given as PV upon RT. The critical point पे the pressure, volume and temperature are going to be equal to the critical constants. और critical constants के basis पे now we have PC, VC upon RTC. ठीक है? Now एक बार quickly values बता दो. What is PC in terms of A and B? 8 A by 27 B square. PC is A by 27 B square. Then TC, the critical temperature, 8 A by 27 RB. 8A by 27 RB. And VC, 3B. 3B. So when you substitute all these values, we get the ratio of PC VC upon RTC equal to, ये डायरेक्ट याद रखना है, तो मैंने दे दिया है, वैसे you can just calculate it, but then this comes out to be 3/8. Remember this directly. The compressibility factor at the critical point is 3/8. You got to just substitute the values. Answer is C. The ninth is the calculation related to the van der Waals constant. Just cancel it. Because the calculations over here will give you a quadratic equation and then you have to solve the quadratic equation to get the values of the van der Waals constant. तो अब तक कभी भी आया हुआ नहीं है and it is not mentioned in the syllabus, numericals related with A and B. 10th graphical related question है, वो simple है. For 1 mole of a van der Waals gas, when B is equal to 0, B is given equal to 0. Now, under what condition B is actually negligible? B कब negligible हो जाता है? Low pressure. At a very low pressure. So, for 1 mole of a van der Waals gas, when B is 0 and temperature is 300 Kelvin, the PV versus 1 by V plot is shown below. The value of van der Waals constant A is what? Whenever there is a graphical question, we always need to come to an equation. अब सोचो कि इस ग्राफ को सॉल्व करने के लिए आप इक्वेशन तक कैसे पहुंचोगे? V plus AN square by V square into V equal to RT. Perfect. For 1 mole of the van der Waals real gas, we know the real gas equation. उसके अंदर B already 0 दिया हुआ है, मतलब the van der Waals equation would be P plus A n square by V square की जगह for 1 mole it will be A by V square equal, into V minus B है but B तो 0 है, तो यहाँ पर V equal to RT. ठीक है? Now on the y-axis we require PV, on the x-axis we require the reciprocal of volume. तो यहाँ पर multiply कर लो PV plus A by V equal to RT. तो अगर इसको y equal to mx plus c के फॉर्म में अरेंज करें तो PV will become equal to minus A into 1 by V plus RT. So this is your y-axis and this reciprocal of volume is x-axis. So basically जो van der Waals constant A है, that is simply equal to the Negative of the slope. negative of the slope. And how much is the slope? Calculate करो dy by dx. 1.5 minus 1.
हाँ मतलब मैग्नीट्यूड अगर कंसिडर करें तो इट विल बी 4.5/3 which is equal to 1.5. The answer is option C. Yeah. Yes, sir. Now 12th, multiple correct. Which of the following statements are correct? The van der Waals constant B is 4 times the volume occupied by molecules in 1 mole of a gas. Yes. Yes, the van der Waals constant B is 4 times the volume occupied by the gas molecule. That is why it is 4/3 pi r cube, and for 1 mole we multiply by Na. So ये इसका mathematical statement. So A is correct. A gas having comparatively higher value of van der Waals constant A can be liquefied more easily. Higher value of A, liquefaction is easy. True or false? True. True, because A is a measure of Intermolecular forces of attraction. intermolecular forces of attraction. तो जितना A ज्यादा होगा, the molecules can come more closer, and that is why its liquefaction would be possible. So B is correct. Then the term Vm minus B, Vm is the molar volume, Vm minus B in van der Waals equation represents the available volume where molecules of the gas can move. True. True. V minus B जो है, that is basically the available space where the gas molecules can move. तो कंटेनर माइनस जो गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो फ्री वाला वॉल्यूम है जहां पर गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर सकता है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. डी, द compression factor of an ideal gas is independent of temperature and pressure of the gas. True. True. Compressibility फैक्टर प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है. It depends on volume. Compressibility factor was given as the ratio of the real volume upon the Ideal. actual, the calculated ideal volume. V real upon V ideal, बराबर. ठीक है, अब V ideal को हमने क्या लिखा था? nRT upon P. तो ये हो जाएगा P V real upon nRT. Correct. Yes, sir. So compressibility factor, does it only depend on the volume? No, sir. नहीं, बिकॉज जो रियल वॉल्यूम है उसके अलावा वो प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो हमने जो ग्राफ बनाया था दैट वाज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. इफ यू चेंज द टेम्परेचर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का ग्राफ विल आल्सो चेंज, है ना, जो हमने Z वर्सेस P का ग्राफ किया. सॉरी, So, but they said for an ideal gas. ओ ओके ओके, सॉरी सॉरी, ठीक है. रियल गैस होता तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाता. आइडियल गैस बोला है ना, हाँ तो करेक्ट है. ओके, compressibility factor ideal gas के लिए बोला है, then this is a correct statement. If we talk about the real gas, क्योंकि ideal gas के लिए Z तो 1 ही हो जाता है ना, so Z is anyways a constant for an ideal gas. Sorry, I didn't read the ideal gas. So then D will be a correct statement. Real gas के लिए either it's greater than 1 or less than 1, and that does depend on the pressure, temperature both. Fine. Yes, sir. Okay, 14th one. Which of the following statement are correct? For a real gas, the compression factor Z is defined as V real by V ideal. True. True. Yes. At low pressure, the variation of compression factor with pressure can be explained from van der Waals equation, where the term B is ignored in comparison to the term Vm.
True. ट्रू। लो प्रेशर पे भी हम नेग्लिजिबल लेते हैं, करेक्ट है ये। At high pressure, the variation of compression factor with pressure can be explained from the van der Waals equation when the term A is ignored in comparison to the term Vm. False. क्या गड़बड़ है स्टेटमेंट में? Sir, it is not ignored in comparison to VM. Correct. It is not ignored in comparison to Vm, it is ignored in comparison to the pressure. तो ये incorrect हो जाएगा. And the value 6.022 into 10 raised to 23 per mole is assigned to Avogadro's constant, of course, yes. So the answer is ABD. 16. बाकी सब फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस है, सिंपल है. At very high pressure, the van der Waals equation reduces to very high pressure. What is negligible at very high pressure? A. A. So for 1 mole, P into V minus B will be equal to RT. मतलब B वाला term रह जाएगा. So A वाले term are definitely ruled out. So the answer could be either A or C, which are one and the same expressions, A and C. तो तीन केसेस ध्यान में रखना है. एट वेरी हाई प्रेशर A is negligible, at very low pressure B is negligible. If they ask about HTLP, high temperature low pressure, then Both are negligible. both are negligible. बस ये तीन केसेस काफी इंपॉर्टेंट है. हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड HTLP. High pressure A negligible, low pressure B negligible, HTLP both are negligible. And then the van der Waals or the real gas equation can be reduced to a particular form. 17th. Match the column type है. Real gas at high pressure. P. P, because that is the B वाला term. A negligible हो जाएगा तो P will match with, sorry, A will match with P. Q match नहीं होगा because that would be an ideal gas equation. Compressibility factor equal to 1 ideal gas के लिए, and A और B दोनों है, मतलब वो real gas equation है. ठीक है. Now B, force of attraction among gas molecules is negligible. P. सेम ही है ना, A और B. At high temperature and low pressure, HTLP. Q. Q and R. Q and R both. Z equal to 1 is for an ideal gas. So ideal gas equation or Z equal to 1 be valid. And real gas at NTP S. would follow the ideal, real gas equation. Okay, तो ये सिंपल था. कॉम्प्रिहेंशन क्रॉस कर लो, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट टू बी डन. Four point six is about liquefaction of gases, inversion temperature, and JT effect. Hadn't we discussed JT effect? Yes, sir. ये है ना. Fourth one. The critical temperature of oxygen is less than water because the water molecules have fewer electrons than oxygen, two covalent bonds, V-shaped structure या dipole moment. Dipole moment. Critical temperature is dependent on the forces of attraction, and forces of attraction in turn relates with the polarity of the molecule. मतलब A, B और C का कोई लेना देना नहीं है with regards to the critical temperature. So of course the answer to fourth one is D. Fifth one.
It is easier to liquefy oxygen than hydrogen because ease of liquefaction is dependent on the critical temperature. And how is it related? Directly. Higher the critical temperature, easier it is liquefied, right? Yes. So answer bolo. C. Sorry, C. C. Oxygen has a higher critical temperature and a higher inversion temperature than hydrogen. अब ये inversion temperature क्या होता है? See, let's first discuss about the Joule-Thomson effect once again. What was this effect? एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है तो क्या इफेक्ट था ये? Drop in pressure causes drop in temperature. Drop in pressure causes a drop in temperature. Perfect. And that is why the Joule-Thomson coefficient was defined as the change in temperature over the change in pressure when the enthalpy remains constant. So basically यहाँ पर फंडा क्या था कि if we consider a gas under adiabatic conditions, ये इंसुलेटेड कंटेनर ले लेते हैं और यहाँ पर एक पार्टीशन है जिसमें छोटा सा होल है. So here, let's say there is a highly compressed gas, which is at a high pressure, and it is suddenly allowed to expand into the low pressure region. Then this particular effect will cause cooling. तो कंडेंसर इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि एक बहुत ही हाईली कॉम्प्रेस्ड गैस हम लेते हैं और उसको सडनली एक्सपांड करने के लिए अलाउ करते हैं थ्रू अ स्मॉल होल. सो व्हेन इट इज एक्सपांडिंग, दिस पर्टिकुलर कंटेनर इज बेसिकली इंसुलेटेड. सो बेसिकली जब वो एक्सपांड करेगा तो अपने मॉलिक्यूल्स का खुद का ही एनर्जी यूज करेगा. बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इट्स own kinetic energy, basically the molecules would have a drop in the temperature, and in conclusion it will have a cooling effect. And that is why the Joule-Thomson coefficient mu is defined as del T by del P at a constant H. Correct. यहाँ पर if we talk about the cooling effects, अगर cooling effect है तो the temperature is dropping with the drop in the pressure. बराबर. तो अगर हम del T upon del P के रेशियो की बात करें, what will that ratio be? Positive or negative? Positive. पॉजिटिव. तो कूलिंग इफेक्ट के लिए जेटी कोएफिशिएंट जो है दैट इज पॉजिटिव. और अगर यहाँ पर ये उल्टा इफेक्ट बताता है, मान लो उल्टा इफेक्ट, तो उस केस में हीटिंग इफेक्ट होगा. हीटिंग इफेक्ट में वी आर सडनली अलाउइंग द गैस टू एक्सपांड इनटू द लो प्रेशर रीजन. तो डेल पी जो है वो तो एनीवेज नेगेटिव है, बट अगर टेम्परेचर राइज हो जाता है उस केस में देन डेल टी पॉजिटिव होगा. तो if we consider that particular effect, then the ratio of del T by del P will be negative, which will give you the mu as a negative value, and that will be in turn related to the heating effect. Now ये heating effect हो सकता है depending on the initial temperature of the gas. गैस का initial temperature जो है ना वो काफी important है. ठीक है. तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड टेम्परेचर के नीचे अगर ये गैस का टेम्परेचर है, then there will be a cooling effect as expected. But if these gas molecules are above that particular threshold temperature, then there is an inversion effect observed, meaning instead of the cooling effect there is a heating effect observed. और वो टेम्परेचर जहां पर ये उल्टा इफेक्ट शो करता है, that is called as the inversion temperature.
That is called as the inversion temperature. मतलब for a particular pressure, if the temperature of the gas is below the threshold, यानी कि inversion temperature, मतलब below inversion temperature अगर रहेगा तो ही हमें expected cooling effect दिखेगा. लेकिन अगर गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर Ti के ऊपर है तो फिर अनएक्सपेक्टेडली वहां पर हीटिंग इफेक्ट शो होगा. समझा? I'll just write over here only. Cooling effect will be observed only if the gas temperature is below the inversion temperature, and inversion temperature के ऊपर अगर गैस ऑलरेडी है तो फिर वो cooling effect नहीं शो कर सकता. And this inversion temperature is given in terms of A and B as 2A upon RB. 2A upon RB. And जो Boyle's temperature था, what was Boyle's temperature? A by R. A by RB. And Boyle's temperature वो temperature होता है wherein the real gas behaves like the ideal gas over a Large range of temperature and pressure. large range of pressure. It is a temperature over which, at which the real gas would behave like an ideal gas over an appreciable range of pressure. ठीक है, तो कहीं पर Ti और Tb में रिलेशन पूछा जाता है तो क्लियर है, द रिलेशन इज इन्वर्जन टेम्परेचर इज ट्वाइस द Boyle's temperature. तो Pc, Vc, Tc, Ti और Tb ये 5 फॉर्मूलेज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है. Pc, Vc, Tc, Ti and Tb. Understood? Yes, sir. तो लिक्विफैक्शन के लिए टेम्परेचर हायर होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर, और इन्वर्जन टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए तो ही वो लिक्विफाई होगा. सो कंबाइनली द कंडीशन इज सी. नाउ ये 6th क्वेश्चन जो मीन फ्री पाथ का है ना, दैट इज टू बी कैंसल्ड. 6th and 10th बोथ आर टू बी कैंसल्ड. ये फॉर्मूलाज नहीं है आपको. इसमें काफी सारा पार्ट जो मैं कैंसिल करवा रहा हूँ वो आपको फिजिक्स के सिलेबस में वैसे है. इट इज देयर इन द फिजिक्स सिलेबस, बट केमिस्ट्री के लिए नहीं है, सो इट विल नॉट कम इन द केमिस्ट्री सेक्शन. Okay, 8th one, now you can solve. The gases show heating and cooling effect during JT experiment and the Joule-Thomson coefficient is heating के लिए Negative. negative और cooling के लिए positive. So the answer is B. Ninth one, looking at the graph, compressibility factor is plotted against pressure Z versus P. So what is correct order of liquefiability of the gases shown in the above graph? A. It should be in the increasing order from top to bottom. मतलब जो ऊपर की तरफ है हाइड्रोजन गैस, that is very difficult to be liquefied because its Z is greater than 1. Compressibility factor अगर greater than 1 है तो difficult to liquefy, and if it is less than 1 below the ideal gas वाला line, then it is easy to liquefy. So it will be in the order hydrogen, then nitrogen, methane and carbon dioxide. 11th 12th question जो है, they are related to thermodynamics. So when physics का and chemistry का दोनों का thermodynamics खत्म हो जाएगा, these questions you can easily do it. Physics का थर्मो स्टार्ट हुआ है KTG? So KTG is done. Done. CPCB? So, but for thermodynamics, sir is waiting for you to start. हाँ, okay.
ठीक है, because there are a lot of concepts which is already covered in chemistry, so it's easier for you to understand in physics. Fine. 14th one, the ratio of inversion temperature of a gas to its boils temperature is 2. 2. Yeah. Then comprehension related to the van der Waals equation. So expression of B in terms of Vc is VC by 3. Vc equal to 3B, so 15 का B. Expression of A in terms of Pc and Tc. So करना क्या है? Here A from the Pc expression will be 27 into B square into Pc. अब B को जो है आपको Tc के टर्म्स में लाना है. So from here I can write the B expression as 8A upon 27R into Tc. अब ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर पुट कर दो एंड देन यू विल गेट द van der Waals constant A in terms of Pc and Tc. So प्योर मैथमेटिकल पार्ट है एंड फाइनली आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए. एंड 17 ऑलरेडी कर चुके हैं. वैल्यू ऑफ Pc Vc अपॉन R Tc, यही तो है compressibility factor at the critical point and it's given as 3/8 directly to be remembered. उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सॉल्व करके फिर रेशियो लेकर आओ. डायरेक्टली यू कैन रिमेंबर 3/8. Okay. 4.7 में ज्यादा कुछ नहीं है. अगेन यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन आर नॉट आस्क्ड इन द केमिस्ट्री सेक्शन. दे हैव गिवन ओवर हियर, बट आपको इसके फॉर्मूलाज फिजिक्स में है लेकिन केमिस्ट्री सेक्शन में नहीं आने वाले हैं. ठीक है, तो 7th यू कैन कैंसल. 8th one, which of the following statement regarding a liquid is not correct? The surface tension of a liquid is a temperature dependent property. Surface tension, viscosity, ये सब temperature से dependent है and both of these properties of liquids are inverse to the temperature. ठीक है, not correct पूछा है. Surface tension of a liquid is an intensive property. अब thermodynamics में we will be studying about intensive and extensive properties. अब just बात निकला है तो I'll discuss over here. Let's consider the combustion of carbon wherein carbon burned in oxygen gives you carbon dioxide. We know that this is an exothermic reaction and the delta H for this will be a negative value. Okay. Now this particular negative value, let's say it's minus X kilojoule per mole. It means that when 12 gram of the carbon is burnt, the amount of energy released is X kilojoules. But if I consider 2 moles of the carbon, let's say I multiply the reaction by 2, then what will be the delta H for this reaction? -2.
-2x मतलब डबल हो जाएगा. यानी if I change the amount of the matter for a particular system, then this particular property is changing. Correct. But if I consider density as a property, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ 12 ग्राम कार्बन और डेंसिटी ऑफ 24 ग्राम कार्बन और डेंसिटी ऑफ 36 ग्राम कार्बन, इज इट सेम और डिफरेंट? Same. सेम ही रहेगा. मतलब डेंसिटी जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो सच प्रॉपर्टीज विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ द मैटर, इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एंड द प्रॉपर्टीज लाइक एंथैल्पी, एंट्रोपी, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, वो जो मास के ऊपर या मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. So now tell me, the surface tension of a liquid, will it be intensive property or extensive property? Extensive. Extensive मतलब it will depend on the amount of matter present in the system. Yes, sir. पानी का जो सरफेस टेंशन है वो कैपिलरी ट्यूब में या फिर छोटे बीकर में या बड़े बीकर में अलग अलग रहेगा. No, no, no. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का, इज इट इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? Intensive. Extensive. एक्सटेंसिव. बराबर. ग्लास का? Extensive. भाई ग्लास तो एक मटेरियल है ना, तो अमाउंट ऑफ द ग्लास आप छोटा या बड़ा ग्लास लोगे तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा क्या? No, sir. नहीं. समझो, इंटेंसिव का मतलब क्या? द प्रॉपर्टी विच इज मैटर इंडिपेंडेंट, एंड एक्सटेंसिव इज द प्रॉपर्टी विच इज मैटर डिपेंडेंट. बराबर. तो जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, सरफेस टेंशन, will it be dependent on the amount of the liquid? No. एक्सटेंसिव हुआ कि इंटेंसिव हुआ? Intensive. इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, थर्मो में और डिटेल में ये जब सिस्टम की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तब क्लियर हो जाएगा. ठीक है, बट इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. करेक्ट है. द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर. Yes, sir. Yes. यस, बिकॉज इसको डिफाइन ही कैसे करते हैं? इट इज द फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. So correct है. And for a liquid, surface tension and surface energy have different values. ये incorrect है. Liquid के लिए surface tension और surface energy एक ही होता है. It is not different. ठीक है. Then 10th one. 9th में भी एक एक्सप्रेशन दिया है, वो आपको सिलेबस के लिए नहीं है, आप उसको कैंसिल कर दो, कोई इश्यू नहीं है. Tenth, which of the following statements regarding a liquid is not correct? The SI unit of viscosity is Pascal into seconds. False. 1 Pascal into seconds is 10 poise. Now, poise जो है, that is basically the CGS unit of viscosity. ठीक है, और ये रिलेशन करेक्ट है. It is a correct relation. In fact, C or D देखो, I am sure you will be able to identify the correct relation, correct answer. The viscosity of a liquid decreases with increase in temperature. True or false? True. True. And viscosity of a gas decreases with increase in temperature. False. False. ये हमने लास्ट एक डीपीपी में किया था. गैस के लिए विस्कोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट हो जाता है, लिक्विड के लिए इनवर्स होता है. करेक्ट.
So ABC correct statements है, D is incorrect, so the answer is D. 11th भी कैंसिल कर लो. इस सेक्शन में से ज्यादा कुछ आता भी नहीं है. दे आर जस्ट सिंपल फैक्चुअल. अगर स्टेटमेंट्स आया तो आया, अदरवाइज इट्स नॉट इन दैट मच डिटेल फॉर द सिलेबस. 12th one, increase in kinetic energy can overcome intermolecular forces of attraction. How will viscosity of a liquid be affected by the increase in temperature? It is going to decrease. And 13 वापस वही है. How does surface tension of a liquid vary with increase in temperature? दोनों में inverse relation है, and that's why the answer for both of them is going to be decreasing. ठीक है. इंटीजर टाइप में न्यूमेरिकल्स दिया है. न्यूमेरिकल्स विस्कोसिटी सरफेस टेंशन के नहीं आते हैं. कैंसिल कर दो. In short, for states of matter, the important part from which the normal questions come is the van der Waals or the real gas equation and the velocity of the gas molecules. RMS, average or most probable, और काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड रिलेशंस. बस इसमें से जनरली क्वेश्चंस अब तक आए हैं ओवर द इयर्स. बाकी कोई टॉपिक ज्यादातर टच भी नहीं हुआ. ठीक है. Yeah, sure. फाइन. सो नेक्स्ट टॉपिक फॉर एडवांस वुड बी केमिकल बॉन्डिंग, जो कल भी हम डिस्कस करेंगे. सो मोर और लेस केमिकल बॉन्डिंग में काफी कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एट द एडवांस लेवल आल्सो इन द ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक जो हमने किया है एडवांस लेवल पे, उसमें केमिकल बॉन्डिंग का काफी कुछ पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है. सो इट शुडंट बी अ डिफिकल्ट पार्ट केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर. ओके. Yes, sir.